Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. And as we have discussed before कि आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, this topic is called arrays. So स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे arrays. So when we talk about the arrays, अगर हम लोग arrays की बात करें यहाँ पे, तो arrays होते क्या है? सबसे पहला सवाल तो आपके माइंड में ये आएगा. लेट्स से मेरी क्लास में एक बच्चा आया, मैंने उस बच्चे का नाम स्टोर करवाया, नेम 1 इज इक्वल्स टू अब्दुल्ला. मेरी क्लास में एक और बच्चा आ गया, मैंने उसका नाम भी स्टोर करवा दिया. लेट्स से द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट वाज नेम 2 इज इक्वल्स टू अनाया. मेरी क्लास में एक और स्टूडेंट आ गया, मैंने उसका भी नाम स्टोर किया. द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट बच्चों वाज साद. अब मेरी क्लास के अंदर 300 स्टूडेंट्स आ गए. मैंने जल्दी जल्दी उनका नाम स्टोर करना स्टार्ट करा. नेम 4, नेम 5, नेम 6 एंड टिल 300. जब तक मैंने उन बच्चों का नाम स्टोर करा, वो सारे बच्चे जा चुके थे. बोलते क्या करें सर, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इतना टाइम लग गया इस प्रोसेस के अंदर कि वो सारे बच्चों दे वेंट, because it's a time consuming process storing the name for each and every student one by one. अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करना, इतना बड़ा कोड हो जाएगा आप लोग का. तो दिस नेम 1, नेम 2 एंड नेम 3, ये तीनों क्या है? दे आर द वेरिएबल्स. तो बच्चों एरेज भी क्या होते हैं आपके पास? ये भी वेरिएबल्स होते हैं. लेकिन ये कैसे वेरिएबल्स होते हैं? दे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज. So arrays हमारे पास क्या होते हैं? They are also variables, but they can store multiple values. Values in an array are stored on the basis of indexing moreover you should know all elements in an array has same data type. और आपके सिलेबस के अंदर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरेज. सो टाइप ऑफ एरेज आर 2. नंबर 1 डायमेंशनल या 1D एरेज एंड 2 डायमेंशनल 2D एरेज. सो अब बच्चों देखिए, योर कॉन्सेप्ट शुड बी रॉक सॉलिड कि आपके पास एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर कैसे होती हैं. दिस इज द मेन पॉइंट. अब देखिए, अगर मुझे 300 नेम्स स्टोर करवाने, तो आपकी मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह की जगह बन जाएगी, लाइक दिस. अब इस जगह के अंदर हम लोग के पास क्या होते हैं? हमारे पास वेरिएबल हमारा एक ही होगा, दैट विल बी लेट्स से मैंने उसका नाम दे दिया नेम. अब ये वेरिएबल एक ही है मेरे पास. The name of this variable will remain 1, but this variable will be containing indexes like 1, 2, 3,
Just give me a minute. हाँ, so where I was, मैं आप लोग बताता हूँ। तो इस तरह आपके पास क्या होती है, इंडेक्सेस क्रिएट होते हैं 1 2 3 4 till 300। अब मैं हर इंडेक्स के ऊपर एक वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। लेट्स से आई स्टोर द वैल्यू ऑन द फर्स्ट इंडेक्स वाज तूबा, मैंने सेकंड इंडेक्स में स्टोर करवा दिया साद, मैंने थर्ड इंडेक्स में स्टोर करवा दिया लेट्स से अरीशा, मैंने फोर्थ इंडेक्स में स्टोर करवा दिया लेट्स से अब्दुल्ला, एंड सो ऑन। हर इंडेक्स के अंदर मैं क्या करवा सकता हूं, एक एक वैल्यू स्टोर करवा सकता हूं। सो एरेज स्टोर्स values on the basis of indexing। तो every index stores a value। हर इंडेक्स बच्चों क्या करता है, आपके पास एक वैल्यू स्टोर करवाता है अपने अंदर, एंड ऑल द एलिमेंट्स आर हैविंग द सेम डेटा टाइप। अगर मैं यहाँ पे 300 एलिमेंट्स डिफाइन कर रहा हूं, तो 300 के एलिमेंट्स की सबकी डेटा टाइप क्या होगी, इट विल बी सेम, एंड ऑफ कोर्स दैट विल बी स्ट्रिंग। सो हम लोग अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एरे, एंड द क्वेश्चन इज and the question is input 300 names and store them in an array। 300 बच्चों के नाम आप लोग को क्या करवाने, आप लोग को इनपुट करवाने और स्टोर करवाने किसके अंदर, इन एन एरे। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, आई डिक्लेयर्ड एन एरे, मैंने एक एरे डिक्लेयर करा, डिक्लेयर नेम एरे 1 colon 300 of string। So this is how you declare an array। Let me define the stuff, like this declare is actually your keyword, this is your keyword, this name is actually, this is the name of the array, name of array, this is also again but your keyword, this one is actually your lower bound of the array, this is called lower bound, this 300 is actually your upper bound of the array, and ये ऑफ भी आपके पास कीवर्ड है, string is actually, this is the data type of array। ये आपके array की data type हो गई। So this is how you define an array, this is how you declare an array, this is how, this is the structure for defining the array बच्चों। अब I define few more things, declare let's say index, and I define the data type as integer। Now I put a for loop over here for index is equals to 1 to 300। The first value of index will be sir 1। तो मेरा लूप फर्स्ट टाइम चला, मैंने यहाँ पे आउटपुट करवाया, आउटपुट एंटर नेम
for a student, and I input the value in name square brackets index. So what did I just did? The first value of index will be, of course, that will be equals to 1. तो मैंने अपने एरे के अंदर पहले इंडेक्स के अंदर यहां पे इनपुट करवा लिया, एंड आई सिंपली पुट नेक्स्ट इंडेक्स. अब यू पीपल नो व्हेनेवर दिस स्टेटमेंट अकर्स, जब भी ये स्टेटमेंट आती है आपके पास, तो बाय डिफॉल्ट फॉर लूप के अंदर कितना इंक्रीमेंट होता है? वी हैव एन इंक्रीमेंट ऑफ +1. तो इंडेक्स की वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2. तो अब मैं जो नेम इनपुट करूंगा बच्चों, दैट विल बी ऑन सेकंड इंडेक्स, तो वो यहां पे स्टोर हो जाएगा. फिर अगेन नेक्स्ट टेक्स्ट, द वैल्यू आई एम गोइंग टू स्टोर विल बी 3. अब मैं जो वैल्यू स्टोर करूंगा बच्चों, दैट विल बी ऑन थर्ड इंडेक्स, दैट विल बी स्टोर्ड ओवर हियर. और ये लूप आपका चलता रहेगा टिल 300. The value of index will be incremented by +1, and they will be stored on each and every index. And this completes our first question, that is input name for 300 students and store them in an array. तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है. अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सवाल है, feel free to ask, वरना क्लियर लिख दें in the chat option so that I can move forward. अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई anything that you need to ask, feel free to ask. वरना बच्चों just write down clear in the chat option so that I can move to the next question. Abdullah, Anaya, Tuba, anyone, any question, anything that you need to ask? Array को declare किस तरह करते हैं? The name of the array, lower bound, upper bound, the data type of the array. First line देखो, whenever we need to declare the array, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे declare, then array का नाम आता है colon, then the keyword is array. फिर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बताते हैं कि this is the lower bound of the array. अगर मुझे 300 एलिमेंट स्टोर करवाने तो 1 से लेके 300 इंडेक्सेस होंगे. अगर मुझे 80 एलिमेंट स्टोर करवाने तो 1 से लेके 80 हो जाएगा ये. अगर मुझे 40 करवाने 1 से लेके 40 हो जाएगा ये. एंड फिर मैं बताता हूँ कि किस टाइप का रिकॉर्ड मुझे स्टोर करवाना है. तो दैट विल बी, मैंने यहाँ पे बता दिया कि डेटा टाइप ऑफ द एरे विल बी स्ट्रिंग. देखो डेटा टाइप क्या होती है आपके पास, अगेन जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 300, all the elements will be having the same data type, that will be string. Like अब ये जितनी भी आपके 300 एलिमेंट्स होंगे, सबकी डेटा टाइप क्या होगी? इट विल बी स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग. नाउ आप लोग को डेटा टाइप वाला सवाल है, ये आपका क्वेश्चन फर्दर क्लियर होता है इन द नेक्स्ट पार्ट. लेट्स सी. तो यहाँ मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने लिखा. द क्वेश्चन इज input names and physics marks for 75 students in an array. दिस इज पार्ट ए. पार्ट बी भी करवाऊंगा इसका, पार्ट सी भी करवाऊंगा, ठीक है, आज की क्लास में ही करवाऊंगा. सो अब बच्चों मुझे एक एरे डिक्लेयर नहीं करना. आई नीड टू डिक्लेयर 2 एरेज. वन एरे विल बी स्टोरिंग द नेम्स and the other array will be storing physics marks, and the total number of students that we have is
that we have are 75. अब देखिए डेटा टाइप की आप लोग बात कर रहे थे, तो नेम की डेटा टाइप क्या होगी? ऑफ कोर्स इट विल बी string. And when we talk about the physics marks, so the data type will be integer. नहीं अभी साथ we will be storing them in one D arrays के अंदर separate store करवाने हैं अभी. We are not going to talk about the 2D arrays अभी, बाद में बात करेंगे 2D arrays के ऊपर. So what I did, I started the question, declare I named the array as st name array 1 colon 75, and the data type will be string. Now I declared another variable for storing the physics marks. Declare phy marks. It will be an array having 1 colon 7 of, let's say I kept the data type as integer. I declare another variable, declare index, and of course it will be integer. Now I started my for loop for index is equals to 1 to 75. The first value of index will be 1. तो मैंने यहाँ पे बच्चों फर्स्ट इंडेक्स के अंदर स्टोर करवाया, that will be output enter name for student is equals to comma index. सर ये क्या किया आपने? तो बच्चों पहले आप लोग के पास ये मैसेज लिखा हुआ आएगा like this, enter name for student is equals to, and then the value of index will be displayed. So the first value of index will be 1. तो ऐसे लिखा हुआ आएगा enter name for student is equals to 1. और मैंने यहाँ पे बच्चों इनपुट करवा दिया, इनपुट the name of the array was st name, और कौन से इंडेक्स में इनपुट करवाना है मैंने बताया इंडेक्स में इनपुट करवा दो, एंड यू ऑल नो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी 1. तो पहले इंडेक्स के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा? यू विल बी हैविंग लाइक इस तरह के 2 एरेज होंगे आपके पास. तो आपके पास पहले इंडेक्स में क्या हो जाएगा? one of the array is st name and the next array is phy marks. So आपके पहले इंडेक्स में बच्चों नाम आ गया, लेट्स से आई एंटर्ड अनाया. अब मैंने पहले इंडेक्स में ही क्या करवाने, मुझे मार्क्स भी एंटर करवाने, तो मैंने यहीं पे एक और मैसेज डिस्प्ले करवाया, दैट विल बी आउटपुट एंटर physics marks, input phy marks, again index, and we all know the first value of index is 1. तो बच्चों इनके corresponding इंडेक्स में क्या होंगे? इनके फिजिक्स के मार्क्स भी स्टोर हो जाएंगे, लेट्स से 88. और मैंने यहीं पे क्या लगा दिया? नेक्स्ट इंडेक्स. आप लोग को पता है whenever this statement is executed, क्या आप लोग को वापस से लेके जाएगी ऊपर, back towards the for. Now the value of index will become 2. अब मैं यहाँ पे बच्चों करवाऊंगा enter name for student and 2. अब जो नाम मैं एंटर करूंगा that will be stored in the second index. Let's say I entered Saad. Now it will be stored in the second index, let's say 91.
अब अगेन नेक्स्ट इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 3. अब मैं जो नाम एंटर कर पाऊंगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द थर्ड इंडेक्स. लेट्स से द नेम वाज Abdullah, and the marks will be again बच्चों stored in the same index, that will be 3. Let's say 81. तो what message I am trying to give you, मैं जो आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपका नाम पहले इंडेक्स के अंदर स्टोर है तो पहले ही इंडेक्स के अंदर आपके मार्क्स भी क्या होंगे, दे विल बी स्टोर्ड. अगर आपका नाम दूसरे इंडेक्स में स्टोर है तो आपके मार्क्स भी सेकंड इंडेक्स में ही स्टोर होंगे. अगर आपका नाम थर्ड इंडेक्स में स्टोर है तो थर्ड इंडेक्स में ही आपके मार्क्स भी क्या होंगे, स्टोर होंगे. और ये लूप बच्चों आपके पास अब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. कब तक? टिल 75. टिल 75. Yes, arrays can be used in other loops as well. आपके पास while के अंदर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, रिपीट until के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बट वहां पे फिर हमें इंडेक्सिंग डिफाइन करनी पड़ेगी. लाइक इंडेक्स एक वेरिएबल या काउंटर एक वेरिएबल हमें डिफाइन करना पड़ेगा, दैट वी विल बी यूजिंग. सो पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों. पार्ट ए में मैंने 75 बच्चों के नाम और उनके फिजिक्स के मार्क्स क्या करवा दिए, स्टोर करवा दिए इन अ 1D एरे. अगर अब बच्चों अगेन कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई सवाल है, फील फ्री टू आस्क, वरना मैं इसका पार्ट बी फिर स्टार्ट करवाऊंगा. वरना क्लियर लेते हैं चैट ऑप्शन में, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ूं. Any question, any doubt, feel free to ask. Abdullah, Anaya. Okay, we have a question. Sir, do we have to write index with the first output? वैसे तो अभी मैंने आउटपुट अच्छा ये वाला इंडेक्स बोल लो, नहीं इट्स नॉट कंपलसरी. बस थोड़ा सा अब्दुल्ला खूबसूरत लगेगा आपका कोड जब लिखा हुआ आएगा, पहले बच्चे का नाम एंटर करो, दूसरे बच्चे का नाम एंटर करो. तो जस्ट टू मेक श्योर कि आपका कोड थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जस्ट फॉर दैट पर्पस. इट्स नॉट कंपलसरी. क्या आप बार बार आप मेंशन करो इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स, आप मेंशन करो, ठीक है. नाउ पार्ट बी. पार्ट बी हमें बता रहा है कि द क्वेश्चन इज प्रिंट लिस्ट ऑफ फेलियर्स. हमें यहाँ पे एक लिस्ट प्रिंट करवानी है फॉर द फेलियर्स. एंड फेलियर कौन होगा बच्चों? नोट लेस देन 30 इज कंसिडर्ड टू बी फेल. तो मेरे पास अब पार्ट बी है बच्चों, ये मेरे पास 75 बच्चों के नाम और उनके फिजिक्स के मार्क्स क्या है, स्टोर्ड है. अगर कोई बच्चा फेल है, अगर कोई बच्चा फेल है तो उस बच्चे का सिर्फ क्या करवाना है, मुझे नाम डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर. दैट्स द क्वेश्चन. सो मैंने स्टार्ट करा यहाँ पे इस क्वेश्चन को, कंटिन्यूएशन है. फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 75. I checked for the condition if physics marks index are less than 30, तो इस बच्चे का नाम डिस्प्ले करवाना है. देन आउटपुट
st नेम कॉमा इंडेक्स, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया नेक्स्ट इंडेक्स. सो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी 1. मैं पहले बच्चे के मार्क्स चेक करूंगा, अगर ये लेस देन 30 है तो इस बच्चे का मैं नाम डिस्प्ले करवा दूंगा. नेक्स्ट इंडेक्स वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स. इंडेक्स की वैल्यू बच्चों अब क्या हो जाएगी 2. मैं सेकंड बच्चे के मार्क्स चेक करूंगा, अगर दे आर लेस देन 30 मैं उस बच्चे का नाम डिस्प्ले करवा दूंगा. देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, कब तक चलता रहेगा ये टिल 75. अगर किसी भी बच्चे के मार्क्स विल बी लेस देन 30 तो उस बच्चे का मैं नाम डिस्प्ले करवा दूंगा. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट द लिस्ट फॉर द फेलियर्स. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, फील फ्री टू आस्क. कोई क्वेश्चन, कोई सवाल इस क्वेश्चन के अंदर, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है बच्चों पूछ लो. द क्वेश्चन वाज प्रिंट लिस्ट ऑफ फेलियर्स. तो बच्चों अगर आपके मार्क्स आर लेस देन 30 then we are going to print the name of that particular student. That's it, done. चले मैं आप लोग से सवाल एक बताता हूं. जनरली लास्ट क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो जनरली बच्चों ने पूछा कि सर ये इंडेक्स आपने डिक्लेयर नहीं करा इस क्वेश्चन के अंदर. तो बच्चों सिंस मैंने आपको बताया दिस इज पार्ट बी, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द क्वेश्चन. सो आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इन द पार्ट ए. पार्ट ए में मैंने ऑलरेडी इंडेक्स को क्या करवा दिया था, डिक्लेयर करवा दिया था. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं करी. नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट सी. पार्ट सी करते हैं जरा. पार्ट सी इज काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पास. कितने स्टूडेंट पास हैं आप लोग को बच्चों. अब ये क्या करना है, काउंटिंग करनी है. और आप लोग को पता है whenever we need to perform counting we need to initialize count with 0. so I declared a variable. अब मुझे variable declare करना पड़ेगा because this is a new variable that I will be using in this part. so declare count pass and I initialize the data type with integer. Now count pass will be equals to 0. I put a condition for index is equals to 1 to 75. I check कि student pass है या नहीं. So if physics marks and we remember the index array, index is greater than equals to 30. तो बच्चों अगर पहले बच्चे के marks are greater than equals to 30 तो इसका मतलब वो बच्चा क्या है, पास है. तो I need to just count that. Then count pass is equals to count pass plus 1. और यहीं पे मैंने क्या करवाया एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया नेक्स्ट इंडेक्स. अब ये लूप आप लोग को ऊपर जाएगा. द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 2. मैं अब चेक करूंगा सेकंड बच्चे के मार्क्स. अगर इफ दे आर ग्रेटर देन 30 देन मैं काउंटिंग कर लूंगा. अगर नहीं होंगे तो मैं डायरेक्ट एंड इफ करके अगले बच्चे पे मूव हो जाऊंगा. देन बच्चों इंडेक्स वैल्यू 3 हो जाएगी. मैं थर्ड बच्चे को चेक करूंगा. देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9 एंड सो ऑन. ये चलता रहेगा टिल 75. मैं एक एक बच्चे का एरे के अंदर मार्क्स चेक करूंगा एंड इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 then I am going to the count into the variable that is called count pass. मैं इसकी वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट करवा दूंगा. When the loop is going to end, जब ये loop end हो जाएगा after running 75 times, so the total number of pass students those are pass वो स्टोर हो जाएगा हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर that is called count pass.
So I'm going to output that value. That will be output total students pass is equals to comma count pass. And we are done with this part as well. We are done with this part as well. So अभी बच्चों हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे अभी अपना स्टार्ट करा है. We just have started arrays. We perform 1, 2, 3, 4 questions on 1D arrays. मैंने आप लोग को डिफाइन करा 1D array होता क्या है और arrays होते क्या है. They are the variables that can store multiple values, and we perform few questions on 1D arrays over here. आज हम लोग इसको यहीं तक होल्ड करेंगे because I have a meeting. अभी एक मीटिंग में जाना है मुझे. कल आप लोग का क्विज है बच्चों ऑफ द टॉपिक दैट इज कॉल्ड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. आई टोल्ड यू बिफोर. और कल सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे के दरमियान आप लोग किसी भी टाइम पे वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं. आई विल बी गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, और टेस्ट का लिंक और पासवर्ड मैं आप लोग को ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा कल. ठीक है, तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. टेक केयर एंड स्टे सेफ.